joining us now to look at this. Shraddhan Farasat, advocate of the Supreme Court, Mahesh Verma, the BJP leader, and Sukhpreet Singh as well. Shraddhan Farasat, the biggest story over here is this heading to another major Masjid Mandir issue where there is going to be a huge battle or legal battle to interpret what exactly the existing laws say, whether it's 1991 or even the Ayodhya judgment. Yes, so I think the real test here is not so much of any law, but I think the Supreme Court's own words are quite clear in the Ayodhya judgment. I think the point really is, and that was really the bargain in the judgment, as it were, that we are giving this Ram Janam Bhoomi to the side which is claiming it. But this is not going to be a basis for further similar claims, because there is an act of 1991 which is in place. To that, the Babri Masjid, Ram Janam Bhoomi was an exception. Right. But there are no other exceptions. And therefore, any other such claims will effectively be not allowed to even begin as per both the act, and then the Supreme Court goes on to interpret and talks about secularism and. But Shraddhan, at the same time, this is also being looked at by the Supreme Court, whether Babri set a precedent, the Ayodhya judgment set a precedent, and whether. That's right. I think the language of the judgment is very clear. Therefore, I said that it's really not even the test of the law. It's really a test of the court itself. Right. That a judgment which is 2 years old, will it, when the first case which comes up now of what was really the bargain in the judgment, as it were, will it stand? Yeah. Or will in 2 years it get diluted? That's very important. Right. Mahesh Verma, one second, Shraddhan, let me go across to Mahesh Verma. Okay, we don't have him. Let me go across to Sukhpreet Singh. You know what Shraddhan was referring to, and I have the operative paragraph, it's 652 of the Ayodhya judgment, which says, and I quote, "For any person who seeks solace or recourse against the actions of any number of ancient rulers, the law is not the answer. Our history is replete with actions that have been judged to be morally incorrect. Even today, we are liable to trigger vociferous ideological debate." The court says you cannot turn back on history and say that used to be mine, but it's not mine. Therefore, I seek it. The court says that they are not in a position to get into this debate. पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि हर केस की जो तथ्य होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं. फैक्ट्स हर केस में डिफरेंट आते हैं. यहाँ पे अगर आप यूपी की इस पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, जब शिवलिंग मिल गया है, उसके सबूत मिल गए हैं, हमें हर चीज को अगर उस टाइम की जजमेंट के अनुसार और आज के हालातों में बड़ा डिफरेंस है. आज सच्चाई लोगों के सामने आ रही है. बहुत सारा सोशल मीडिया एक्टिव है. हर चीज नॉर्मल फैक्ट्स सामने आ रहे हैं. ये मैं 2 साल पुराना अयोध्या जजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं. तभी भी सोशल मीडिया था, अभी भी है. और उस जजमेंट में साफ तौर पे सुखप्रीत जी बताया गया है दैट अ कोर्ट इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक अ डिसीजन ऑन समथिंग दैट हैज हैपेंड अ लॉन्ग टाइम बैक. आप आज की देखिए, मेरे कई ऐसी जजमेंट्स और भी हैं. और बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हर चीज के फैक्ट्स अलग हैं. यहाँ पे आप अगर आज आपको प्रत्यक्ष है कि वहां शिवलिंग मिल गया है, आप देखिए इतने बड़े फैक्ट को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना जी. और दूसरी बात, अगर किसी की आस्था जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन ही आस्था का है. मैं कोर्ट पे पूरा रिलाय करता हूं. जब आस्था का क्वेश्चन होता है और जहां बड़े बड़े सबूत मिल जाते हैं, वहां सबको चुप रहना पड़ेगा. हमें कोर्ट की तरफ देखना पड़ेगा. नहीं, अगर सुखप्रीत जी अगर आप सबूत के बारे में कह रहे तो वी हैव अ 4000-year-old हिस्ट्री, तो वी विल कीप डिगिंग फॉरएवर. नहीं, मतलब somebody can come to my house tomorrow and say that there is a mandir underneath my house will be dug, and you can keep on doing this. Sir, this is not your house, this is not your property. This is something. But it is the house of members. It is the house, the home, the place of worship of members of the Muslim community. Sir, now, there is a historical claim, sir, but our culture, sir, Sukhpreet ji, our history is syncretic. There are Hindus, Muslims, temples, masjids, they've all been built in the same area. Where does one stop this? मैं कह रहा हूं, आज कहीं भी अगर कहीं आपको और कोई अंश पता लगता है, कहीं पता लगता है कि वो हिस्टोरिकल प्लेस है, अगर आपको वहां पे मंदिर के लक्षण मिल रहे हैं, तो बुरा क्या है? मेरी आंसर ये बताइए मुझे कि हम अगर किसी ने इग्नोर कर दिया ये पार्ट को, तो आज हम भी इग्नोर कर दें इस चीज को? मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रही. अगर एक पक्ष का पूरा धार्मिक आस्था है वहां पे,
और अच्छी चीज है, हिंदुस्तान की ये अच्छी वो है, प्रथा है। और दूसरा पक्ष और दूसरा रिलीजन का जो व्यू है, जो मतलब किसी की आस्था को दबाया और जो मस्जिद जो वहां खड़ा है उसको हम भूल जाए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी के पक्ष को हमें कोर्ट के ऊपर रिलाई करना चाहिए। अगर कोर्ट ने ये जी, और कोर्ट के कई स्टेटमेंट्स है, ऑर्डर में है, अयोध्या ऑर्डर में है, फॉर एग्जाम्पल। एंड शादान, आई नो योर हैंड अप। अगर मेरी आस्था मिलती है वहां पे, और मेरे को कल मैं अपनी बात करता हूं, अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे बाबा जी कल को आए हैं, तो मैं उस सुप्रीत जी, बिफोर आई गेट शादान इन, वन मोर quote from the, I am only quoting what the Ayodhya judgment says. And I quote paragraph 633. Sir. I must say this is a long judgment. You are quoting, अपने हिसाब से हमें अपनी convenience. So you please quote parts of the judgment which you feel disagree, and I will also quote parts which are ambiguous. I know, you are right. You are right. You have to. No, you are right. You are right. I will also do that. I will also do that. Bear with me. But the point I'm trying to make is one quote over here. Human history is testament to the rise and fall of rulers and regimes. The law cannot be used as a device to reach back in time and provide a legal remedy to every person who disagrees with the course of which history has taken. Shraddhan, is this not absolutely clear? Yeah, not just this. In fact, there are paras upon paras upon paras in the Constitution Bench judgment. The point really is this, that we have a very layered history. There is a lot that has happened. And post 15th August 1947, our constitutional project is not to unravel that history. Whatever that history is, you move forward together, because now in 15th August 1947, you have multiple communities. I'll give you another example. Why just this context? There are various other contexts. There was a King Pushyamata Sangha who replaced the Mauryan Empire. There are so many claims, historical claims, that he destroyed all the Buddhist temples. And one second. Should we, the धार्मिक आस्था को नहीं जोड़ सकते सर, historical claims will not be gone into. Somebody will move. Some Buddhists, 5 Buddhists will move. Sir, here was a Buddhist temple earlier. In 3,500 years ago, there was a Buddhist temple. ठीक बात है ना सर, अगर बुद्धिस्ट टेम्पल है तो एग्जिस्टेंस है, उसकी एग्जिस्टेंस जिंदा रहनी चाहिए सर। हम अपनी कल्चर हमने जो अपनी कल्चर मार दिए हैं, हमने जो अंदर सभ्यता को मार दिया, उसको जिंदा रखना पड़ेगा सर। ये हमारी कल्चरल वैल्यूज। सुप्रीत जी, हाफ अ सेकंड। सुप्रीत जी, हमने अपनी कल्चरल वैल्यू जो मर रही है उसको जिंदा रखना पड़ेगा सर। अगर इसी कोर्ट ने उसी चीज को बाद में जायज भी कहा है कि यस अयोध्या वहां पे मंदिर बनेगा। Okay, Shraddhan and Sukhpreet ji, 1 minute. Let me go across to Mahesh Verma ji, who is very patiently waiting. Mahesh ji, अयोध्या judgment में एक statement है which says, and I quote, the courts of today cannot take cognizance of historical rights and wrongs unless it is shown that their legal consequences are enforceable in the present. This is important, sir. आपके ख्याल से this statement, unless it is shown that their legal consequences are enforceable in the present, इसको देखना चाहिए और इसी अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे को देखना चाहिए कि there is legal ground that this case can be reopened. महेश जी बताइए। महेश जी बताइए। मेरा मन, महेश जी आप शायद म्यूट पे है। We'll try. Oh, Mahesh ji, I can't hear you. Sir, yeah, can I come in on that? See, the point मेरा is, मानना है सर, जहां पे आस्था है, firstly, जहां पे Mr. Singh, आस्था है kindly ना allow सर, me to complete my हमें point. Okay, both of you, 1 second, can I decide? I promise you, I will give Shraddhan 1 minute and I will give you 1 minute after that. I don't have a coin, otherwise I would have done a toss. Thank you. Shraddhan, 1 minute to you. Your time starts now. This is the big fight. Go ahead. Yeah, thank you. So first point, the law of worship 1991, it's irrelevant what the evidence is or not is. The principle is we are not going to dig past our history, because if you are going to do, you can always find something here, something there. So therefore we do, because that creates conflict in the present society. That's the principle. And therefore we should not go down that line. That's the constitutional principle and of the act. Now coming to this specific thing. Yes. Look at the curious case, the way there is firstly, a court commissioner is appointed without deciding whether the suit is maintainable at all. Then while that court commissioner is carrying out the court examination and the advocates are there,
The plaintiff's lawyer moves the court yesterday and says, oh, guess what? I have found something there. Based on that oral avowal, while the commission is still being carried out, an order sound bites are given to the media. Correct. An order is passed. Order is passed by the court. Sound bites are given. Today, just after the Supreme Court has heard the matter, the court commissioner is dismissed. I mean, it's bizarre to the Okay, base. all right. I Okay, don't understand Sukhpreet ji. what's Okay. Shraddhan, 1 second. Sukhpreet ji, go ahead. Yes. हर केस की जो परिस्थिति होती है बड़ी डिफरेंट होती है। पहले हम अयोध्या के टाइम पे भी 91 में इन्होंने जब अयोध्या को फाइट कर रहे थे ना, तो ये यही ऐसी लैंग्वेज पे थे कि यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये तो हमारा पुराना बना हुआ है, आप किसी के घर पे ये नहीं बना सकते, किसी के घर पे वो नहीं बना सकते। आज उसी फैक्ट्स को हम आगे रख रहे हैं। वहां पे राम मंदिर बन चुका है। रही बात मैं आपको बताता हूं, जहां कल्चरल वैल्यूज, जहां पे एक धार्मिक आस्था जुड़ी होती है ना, जिस जगह पे, उसको आप इन सेंसिटिव मैटर्स को आप ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते कि नहीं यार यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकती। किसी मुद्दे को रूल आउट नहीं कर सकते सुखप्रीत जी, पर एक आदेश दिया गया है, एक कोर्ट ऑर्डर है और पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ है इस पे। सर, इसी जजमेंट ने बाद में रूल आउट करके मंदिर को जगह भी दी है। इसी जजमेंट ने एज एन एक्सेप्शन जजमेंट है, नॉट एज द रूल। मैं एग्रीड हूं, पर आप इस सारी जजमेंट में अपने हिसाब से कोर्ट नहीं चुन सकते। अगर आप पूरी So that is the larger point, Sukhpreet ji, and that is what is being debated. That is the Supreme Court is looking at that larger issue. Okay. 1 second, Sukhpreet ji. Mahesh Verma also with us. Mahesh ji, we've got you on the phone line. Mahesh ji, go ahead. Yes. जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, इसमें जैसे आपने शुरू में बड़े अच्छे सवाल पूछे कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट जब एक लाइन खींच चुका है किसी भी रिलीजियस प्लेस को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो फिर ऐसे में ये हो हल्ला हंगामा क्यों है? ये वैसे कौन होते हैं? ये कानून को डिफाइन करने वाले, एक पैरेलल अदालत चलाने वाले, ये टीका टिप्पणी करने वाले, ये मुद्दे को उखाड़ने वाले। सवाल यह है कि बनारस कोर्ट ने जिस चीज के ऊपर ऑर्डर पास किया, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पास करने से पहले का वो मामला पेंडिंग है, वो 92 से है। 91 में कानून जब आया और उसके बाद जब एप्लीकेशन उसमें फाइल किया गया, उस वक्त ये सोच के नहीं किया गया ना कि अयोध्या का जो है इस तरह से कोई सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट देगा। अगर उसके ऊपर कानूनी रूप से ये क्या उस कोर्ट को मालूम नहीं है जिस कोर्ट ने लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया। अब रही बात दूसरी की भाई वहां अगर शिवलिंग निकल रहा है, कोई चीज अगर सामने आ रहा है, अगर उस भावना को कहीं उसकी आदर किया जाए, उससे सम्मान किया जाए, उससे देश में विद्वेष ना फैले, उससे कोई टेंशन ना हो, और ये टेंशन फैलाने का तमाम काम जो है इस देश में किया जा रहा है, क्या मतलब बनता है? इस्लाम सर्वोपरि है इस देश में। Okay. Okay, Mahesh ji, I'm sorry, I have to wrap this up because no, I'm out of time over here. Mahesh ji, I wish I could have had the line with you fixed earlier on. I'd like to thank all three of you very much for joining us.